बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Today we are starting with the name of Allah who is the most beneficent and ever merciful. This is class 8, period is mathematics, and today we are discussing our same chapter that we have started in the last video class, chapter number 6, coordinate geometry, and we have covered the 3 previous topics from this chapter. Number 1, the gradient. Then we have completed the next topic, length of a line segment. Then we studied in the last class the last topic, the second last topic of this chapter, equation of a line or a line segment. So we have studied the gradient as m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Length of a line segment as pq is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then we have discussed the equation of the line, that is y is equals to mx plus c. Now today we are starting our fourth and the last topic of today's of chapter number 6, that is coordinate geometry, and this is parallel lines and perpendicular lines. Firstly we will discuss the parallel lines, then we will discuss the perpendicular lines. So what are the parallel lines? Suppose this is a plane, x-axis, y-axis, and on this axis I am having a line over here. This is a line, and I am also having the same line or another line on the plane in the same direction. Now these two lines are known as the parallel lines. These two lines are known as the parallel lines. So what are the parallel lines? Basically parallel lines are the lines which do not intersect each other at any point and they have the same distance. For example, parallel lines क्या होती हैं? जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और उनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, so these are known as the parallel lines. As you can see, these two lines are not intersecting each other at any point and they are having the same distance at this point and also at this point. So these are known as parallel to each other. So it simply means that when or whenever L1 is parallel to L2, so M1 is equals to M2. What does it mean? It simply means that this is your line number 1, L1, this is your line number 2, L2. For example, this line is having a slope of 2. This line is having a slope of 2. So this line is also having the slope of 2. Why is this gradient equal? Because these two lines are parallel to each other, and it's simply, we can see with the help of this diagram, the steepness of these two lines is same. What is gradient? Gradient हम एक्चुअली किसे कहते हैं? Gradient हम कहते हैं ढलान को. आप देखें जिस डायरेक्शन में आपकी ये लाइन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में सेम आपकी ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन जिस अगर इसका ग्रेडियंट 2 है तो इसके ग्रेडियंट का आंसर भी क्या होगा? 2 होगा.
And this symbol, this is L1, your line number 1, this is L2, your line number 2, M1 is your gradient of the first line, M2 is the gradient of your second line. What about this symbol? This symbol is read as is parallel to, and this is the symbol that we use to represent the parallel lines. For example, line AB is parallel to line AC or line CD. Two lines are drawn on the board. This is your line AB, this is your line CD. तो दो लाइंस मैंने आपके सामने बोर्ड पर ड्रॉ की हैं, लाइन ए बी, लाइन सी डी, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, दे आर हैविंग द सेम डिस्टेंस. So we will read this mathematically as AB is parallel to CD. So this symbol is read as is parallel to the two large lines. So it simply means that whenever we will have the two different lines parallel to each other, their gradient will be same or equal. Now we are discussing our today's second topic, that is perpendicular lines. What about the perpendicular lines? Again we are considering a plane as x-axis, y-axis. Now for example, this is a line and this is another line. Now you can notice जैसे हमने परपेंडिकुलर लाइन का टॉपिक स्टार्ट किया तो यहाँ पर आपके सामने जो मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं वो एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, इंटरसेक्ट हो गए. Simply means that whenever the two lines are not intersecting each other, they will be known as parallel lines. But if the two lines are intersecting each other in such a way that they are forming a right angle, means an angle of 90 degree, so these are known as the perpendicular lines. For example, this is line 1, L1, this is line 2, L2. Now you can see that L1 is getting intersected by L2 at this particular point. For example, this point is point A. So at this point A, we are also having an angle of 90 degree. So now these two lines L1 and L2, these two are perpendicular to each other. And this vertical and horizontal line symbol is representing the perpendicular of each other, means L1 is perpendicular to L2. जब भी two lines perpendicular होंगी तो उनके perpendicular होने को हम किस तरह represent करते हैं, symbolically with the help of this particular symbol. And this is read as is perpendicular to L1 is perpendicular to L2. And if the two lines are intersecting each other in such a way that they are forming a 90 degree angle or a right angle, so their slope or the gradient will be multiplied, and the answer of that is -1. Whenever two lines are perpendicular to each other, so the product of their slope is equals to -1. M1 is representing the slope of your line 1 and M2 is representing the slope of your second line. So whenever the slope of this M1 and M2 is multiplied, means we are having their product, so it will always be equal to -1. Okay, इनके ग्रेडियंट बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी स्टीपनेस डिफरेंट है. लाइन 1 आपकी इस तरफ जा रही है, लाइन 2 आपकी इस तरफ से आ रही है, तो इनकी स्टीपनेस डिफरेंट होने की वजह से ऑब्वियसली इनके स्लोप्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, इनका ग्रेडियंट डिफरेंट होगा. तो ग्रेडियंट इनका सेम कभी भी नहीं होता किनका, परपेंडिकुलर लाइंस का, बट their product, the product of the gradients of the two perpendicular lines is always equals to -1. From page number 166. Exercise 60, page number 166 of our book.
Yes, from page number 166, we are having exercise 60. Question number 1, the basic level, very first question, find the gradient of a line parallel to. We have to find the gradient of a line that is parallel to another line, that is parallel to another line, and the equation for the line is given as part A, y is equals to 8x plus 5. Question number 1, part A. इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 5, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो जिस लाइन को आपको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है उस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है और आपको उसका फाइंड करना है ग्रेडियंट. नाउ वी विल मेंशन आवर सॉल्यूशन. Then according to mathematical standard we will repeat our equation after skipping one line. Y is equals to 8x plus 5, as we know that y is equals to mx plus c. ये मैंने मेंशन कर दी जनरल फॉर्म. अब m आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, so m is equals to 8. This is the gradient for this first line, and now we have to find out the gradient of the next line or the line that is parallel to this particular line. So if the two lines are parallel, we know that we have studied right now, if the two lines are parallel, so their gradient is also same. So we are mentioning here, since lines are parallel, lines क्या हैं, parallel है, clearly लिखा हुआ है क्वेश्चन में, parallel होने की वजह से आपका m1 m2 के क्या होगा इक्वल. So the next gradient that you are going to find is also 8. This is the answer of our first part. If we are discussing our next part for question number 1, that is part C. Part B, y is equals to minus 1 over 2x y is equals to minus 1 upon 2x plus or minus 7. This is minus 7. Solution. Repeating equation, y is equals to minus 1 over 2x minus 7. Again the same steps as y is equals to mx plus c. So m is here minus 1 over 2. Since lines are parallel, so m1 is equals to m2, that is why gradient is equals to again minus 1 over 2. This is the answer of the next part of question number 1. Now we are starting our question number 2. Question number 2, from the same page, find the gradient of a line perpendicular to part A. Y is equals to 3x plus 2. अब हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है एक ऐसी लाइन का जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के, और उस दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y is equals to 3x plus 2. y is equals to 3x plus 2. ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है हमारे पास A. y is equals to 3x plus 2 as y is equals to mx plus c. लिख लिया हमने, एक m हमें पता चल गया कि इस लाइन का अपना m 3 है. फिर मेंशन कर देंगे सिंस लाइंस आर, पहले लाइंस क्या थी, पैरेलल थी, अब लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर. सिंबल बना दिया मैंने इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने के बजाय. सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन में जब लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ऑलवेज इक्वल्स टू -1. m2 हमें पता नहीं है, अभी m1 हमें मालूम है, दैट इज 3, तो 3 आपको मल्टीप्लाई होगा m2 से.
यहाँ आपके पास -1, अभी -1 से यहाँ पर हो रहा है आपका m2 से डिवाइड हो रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी डिवाइडेड on the right hand side. Now as you can see that minus sign is representing only your numerator, that is 1. So this -1 will be multiplied by the sign of the denominator, that is a plus sign of this 3. So minus plus minus, and your m2 is equals to -1/3. मल्टीप्लाई होने से पहले आपका ये माइनस साइन सिर्फ न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये आपकी ओवरऑल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का. इन नेक्स्ट पार्ट वी आर आल्सो हैविंग अनदर इक्वेशन फॉर द लाइन, दैट इज y इज इक्वल्स टू -3/4x y is equals to -3/4x plus 6. Repeating the equation, as y is equals to mx plus c. m आपका बन गया जी -3/4. अब आप लिख लेंगे अगेन, सिंस lines are perpendicular, so m1 multiplied by m2 is equals to -1. So according to this, m1 is -3/4 multiply by m2, this is -1. अभी पूरी फ्रैक्शन आपकी मल्टीप्लाई हो रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी डिवाइडेड ऑन द राइट हैंड साइड, -3 divided by 4. So m2 is equals to -1 will be same. The main division is this one division that we have applied because of this multiplication. So I am simply converting my division in my multiplication. So as I convert my division in my multiplication, the fraction that is -3/4 will be inverted and it will be written as 4/-3. Now -1 into 4 plus minus minus, 4 ones are 4 divided by -3, minus minus plus, so 4/3 is the answer of your m2, means the gradient. The required gradient is 4/3. This is question number 2. Now we are starting question number 4, the third question from this exercise. The coordinates of points are A 1 into 101, B -1 4 and C 6k. Find the value of k if line AB is perpendicular to line BC. Question number 4, data. 3 points are given. Firstly, we will mention the data A, B and C. A is 1 and 1 and BE -1 and 4 and C is 6, k. x1, y1, x2, y2, x3, y3. फाइंड हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड हमें करनी है इस k की वैल्यू. दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर द c, y कोऑर्डिनेट है ये, इस k की k वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. एक हिंट हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ AB इज परपेंडिकुलर टू BC. 2 लाइंस, 2 मुख्तलिफ लाइन की यहाँ पे बात की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लेन और एक लाइन है आपके पास AB और दूसरी लाइन है आपके पास BC. तो इन 2 लाइंस को आपको परपेंडिकुलर बताया जा रहा है कि लाइन AB आपकी लाइन BC के क्या है, परपेंडिकुलर है. तो अगर ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, सो इट सिंपली मींस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -1. इनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट भी -1 होना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट देयर ग्रेडियंट्स. सो ग्रेडियंट ऑफ AB वी विल फाइंड as m1 and gradient of BC we will also find as m2 and the value of k. Now we are starting our solution. First head, the gradient of line AB
इज इक्वल टू ग्रेडियंट लाइन ए बी का फाइंड करें, ऑब्वियसली कंसीडर भी पॉइंट ए और बी को करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स y2 minus y1 divided by x2 minus x1 will be equal to our gradient. So y2 minus y1 x2 minus x1. This is the formula. Now we will replace the values from the data. Then we will finalize the answer for the gradient of line AB. Then we will start the work for line BC. So y2 minus y1 is equals to this is y2 4 minus y1 1 divided by x2 minus 1 and minus x1 1 again. Yes, so 4 minus 1, this is 3 and minus into minus plus 1 into 1 2 and this is minus 2. The answer of M1. Next head, gradient of this next line, gradient of line BC, that is considered as M2 is equals to B and C. B and C means y3 minus y2 divided by x3 minus x2. y3 minus y2 divided by x3 minus x2. y3 is your k, k minus 4 y2, x3 is 6, 6 minus minus 1, minus minus plus k minus 4 will be same and it will become 6 plus 1, then k minus 4 divided by 7 is equals to M2. K minus 4 divided by 7 is equals to M2, the second gradient. Now, since line AB is perpendicular to line BC, so according to this given condition, M1 and M2, the product of these two gradients should be equal to minus 1. So M1 is our 3 over minus 2 and M2 is K minus 4 divided by 7 is equals to minus 1. 3 multiplied by k minus 4, numerator will be multiplied by numerator and denominator will be multiplied by denominator because the two fractions are getting multiplied. Divided by minus 2 multiplied by 7. So this will be minus 17, sorry, minus 14, 2 sevens are 14 and this will be 3 into k, 3k plus minus minus 12, 3 fours are 12, minus 1, minus 1. अब माइनस 14 जो कि डिवाइड हो रहा है आपका लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे आप इसे करवा दोगे मल्टीप्लाई, तो ये आपको एक प्लस 14 आंसर देगा. एंड 3k minus 12 is same in both the steps. Now we will shift 12 and it will be added on the right hand side. So it will become 14 plus 12, 26. 3k is equals to 26. 26 divided by 3 is the final value of k. You may also divide this 26 divided by 3. 3 8s are 24. 2 is remainder. Now anti-clockwise, this will be in the upward direction position and 8 will be shifted to your left hand side number as a whole number and 3 will be shifted as your denominator. The anti-clockwise position you have to remember. So k will be equal to 2 numerator, 8 whole number and 3 as denominator. This is also your final answer. Now we are starting our question number 14, the last part of this exercise, exercise 6D, with the completion of question number 14. And in center I am also mentioning the third point, that is point C. Now these 3 points, point A,
point C and point B. These are known as the collinear points. Why are they collinear points? Because they are lying on the same line. They are present on the same line. तो वो points जो एक ही line पर मौजूद हों वो कहलाते हैं collinear points. और वो points जो एक line पर present ना हो, which do not lie on the same line, are known as the non-collinear points. So in question number 14 we are discussing the collinear points. Have a look to the question from page number 166. Question number 14. The coordinates of the 3 points are A, -1, -6. Question number 14. A, -1 and -6. Then we are having B, 3 and 12. And the next coordinate is the point with the coordinates k and 6. C is k, 6. Yes, these are the 3 different points with their coordinates. Find the values of k if part A, B and C are collinear. If A, B and C are collinear, so we have to find out the value of k. And number B, the requirement B, if AB is perpendicular to line AC. पॉइंट ए में अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो के की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 2, अगर लाइन ए बी आपकी पैरेलल हो जाए, परपेंडिकुलर हो लाइन ए सी के, तो फिर आपकी कंडीशन क्या होगी? फॉर द वैल्यू ऑफ के, इन दोनों के लिए हम वर्क करेंगे. पहले हम इन्हें x की वैल्यूज में डिवाइड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे इनके. दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3. कैटेगराइज कर लिया x को, दोनों कोऑर्डिनेट्स को. अब रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट है हमारी वैल्यू ऑफ k इन बोथ द कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1 का हेड डालेंगे, a, b and c आर कोलिनियर. a, b and c जब कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? कोलिनियर simply means that there is a plane and you are having a line and on this line we are having the point A, B and C. तो आपने A, B और A, C का अगर हम स्लोप देखें तो इन दो लाइंस, 2 डिफरेंट लाइंस का हमारा स्लोप क्या होगा? सेम. A से लेकर B तक का डिस्टेंस एक पार्ट और B से लेकर C तक का डिस्टेंस दूसरा पार्ट, या A से लेकर C तक का पार्ट आपका, इनका जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है आपके पास, वो सेम हो जाएगा. और इनके ग्रेडियंट के लिए हम वर्क स्टार्ट करेंगे. पहले लाइन A से लेके B तक का डिस्टेंस लेंगे, फिर A टू C का डिस्टेंस लेंगे, यानी ग्रेडियंट निकालेंगे और फिर उन्हें इक्वल कर लेंगे. K की वैल्यू आ जाएगी. फर्स्ट हेड हम मेंशन कर रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन AB. AB का ग्रेडियंट आपका M1 है. AB, this is your AB, so this will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे. y2 12 minus 6, that is your y2 y1, and x2 is 3 minus 1. Not enough space. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This will become 12 plus 6. This will become 3 plus 1. This is 18. This is 4. And it will be cancelled by 2. 2 9s are 18. 2 2s are 4. So 9 over 2 is your answer for M1. Now we are working for the next gradient. Gradient of line AB and A to C. AC का ग्रेडियंट लेंगे. दिस इज A, C, so y3 minus y1, x3 minus x1. This is M2, the second gradient, y3 minus y1 divided by
x3 minus x1. Replacing the values, simply 6 minus 6 divided by x3, k minus 1. So this is equals to 6 plus 6 divided by k minus plus 1. 6 into 6, this is 12 over k plus 1. This is the answer of the second gradient, M2. Since these 3 points, point A, B and C are collinear, so it simply means that the gradient of line AB and line AC is also equal. Mention कर लेंगे यहाँ पहले एक statement. AB and C are collinear. M1 multiply by M1 is equals to M2. M1 is 9 over 2 and your M2 is 12 over k plus 1. Nine multiply by k plus 1 and 2 multiply by 12. I have applied the cross multiplication. Now this will become 9 into k, 9k plus 9 into 1, 9, 2 into 12, this is 24. 9 will be subtracted from the 24, so it will become 15. This is 9k, this is 9k. Now 15 will be divided by 9. 3 5s are 15, 3 3s are 9. It is 5 over 3 now. K is equals to 5 over 3, and after the division 3 ones are 3, 2 is remainder, and the anti-clockwise shifting it will become 2 1 3. 1 whole 2 over 3 is the final answer of K when A, B, C, the 3 different points are collinear. Now we are starting our requirement B. When line AB is perpendicular to line AC. AB is perpendicular to line AC. We will mention since these two lines are perpendicular, means line AB is perpendicular to line AC. So M1 multiplied by M2 should be equal to minus 1. The answer of M1 is 9 over 2. The answer of M2 is 12 over k plus 1 is equals to minus 1. 9 will be multiplied by 12 and 2 will be multiplied by k plus 1 is equals to minus 1. 9 into 12, 9 2s are 18, 8, 1 carry, 9 1s are 9, 9 plus 2, 9 plus 1, 10. So this is 108 divided by 2 into k, 2k plus 2 1s are 2 is equals to minus 1. Now we will multiply the denominator on the right hand side. So minus 1 will be multiplied by 2k plus 2, and here we will have the 108 and it will become minus 2k and minus 2. This is 108 and 108 is subtracted. 2k will be shifted over here, it will become positive, and minus 2 and minus 108. 108 has been shifted to the right hand side, so it will become a negative number, and 2k I have moved my 2k on the left hand side. क्यों हमने मूव किया? ताकि जो k है हमारा इसका कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव नंबर हो जाए. अगर आप मूव नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा. नाउ वी आर सिंप्लीफाइंग दिस. माइनस माइनस प्लस 2 plus 108 is equals to 110, and I will mention the sign of my greater number. My greater number is 108, so this is minus 110 and this is 2k, and 110 with the minus sign will be divided by this 2,
This will become the value of k. 2 ones are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10. So this k is equals to minus 55. This is the second answer or the last answer of our question number 15. And by the completion of this particular question, we have also completed our chapter number 6, the coordinate geometry. And I hope that you have understood all the questions clearly and all the relevant topics. Now I am starting my next chapter from book page number 387, chapter number 12, namely area and volume of similar figures and solids. Day 387. We are starting chapter number 12. As area and volume of similar figures and solids. And the topics that we will cover today for this particular chapter is our topic number 1, area of similar figures. This is area of similar figures. Yes, so if we are whenever we start a new chapter, firstly we have to discuss the name of the chapter or the title of the chapter, and by discussing the name or the title of the chapter we are simply able to understand the overall criteria of the chapter. So firstly we are discussing the name of our chapter. So the name of the chapter is area and volume. What is this area and what is this volume? Area and volume, these are the two particular geometrical measurements, and area and volume means the space that is occupied by any particular object. अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें तो बेस एरिया से या बेस साइड से किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी भी दूसरी बेस को जितने परसेंट या जितने एरिया को उसने कवर किया है वो उसका एरिया साइड कहलाता है. और जब हम उसकी हाइट की भी को भी इसमें शामिल कर लेंगे ग्राउंड लेवल के अलावा कि उस ऑब्जेक्ट ने हाइटेडली कितने सेक्शन को कवर किया हुआ है, तो उस ओवरऑल सेक्शन को फिर हम उसका वॉल्यूम कहते हैं. एरिया एंड द वॉल्यूम ये दो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप के लिए यूज किए जाते हैं. और ये एरिया एंड वॉल्यूम जो हम पढ़ना सीखेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 12, वी विल डिस्कस दीज टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज फॉर द सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स. So what are the similar figures and the solids? Figures means the geometrical figures, the circle, the square, rectangle, triangular, rhombus, and the so many different shapes. And solids, what do we mean by solids? Whenever a 2D shape is converted into a 3D shape, so it become a solid. For example, this is a square, this is a 2D shape. 2D shape means two-dimensional shape. Two-dimensional shape means we can measure this particular diagram, or we are having the measurement for this diagram in the two dimensions, that's one side and the second side. But if it is converted into the three-dimensional diagram, so it will become a solid. This is a figure, this a plane figure or a plane geometrical figure right now, and how it will be converted into a solid? Simply draw one square, then draw another square overlapping some area of your previous square, then join all the corners, the corresponding corners. In this way it has become a 3D square, a 3D shape. 3D means the three-dimensional. Now we can measure this diagram by this side, and also by this side. These are the three different dimensions for this particular solid. So this is figure, this is solid. Now what about the similar figures or similar solids? For example, if I am drawing a smaller square, so these two are similar, and if I am drawing another smaller 3D square, corresponding corners, yes, these two are similar.
and these two are also similar. Why are they similar? Because they look like they are just like same and they are different in the measurements. ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज में थोड़े क्या है डिफरेंट हैं. If the two different shapes are equal to each other, उनकी शेप दिखने में अगर दो चीजें एक जैसी हो लेकिन अगर उनके साइज में डिफरेंस हमें मौजूद हो तो वो कहलाते हैं आपके पास सिमिलर फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात कर लें, ट्राइंगल इज ऑल्सो ज्योमेट्रिकल शेप. You have studied this topic of similarity in the first semester midterm content in chapter number 11, the similarity and the congruence test. So what is the similarity, or how do we judge the two different figures as they are similar or they are not similar? So their corresponding sides must be proportional. Proportional means they are equal but in the ratio form. They are not directly equal to each other but they are equal in the ratio form. अगर आप corresponding sides की ratio बनाएंगे तो ratio form में वो एक दूसरे के equal हो जाएंगे, means proportional हो जाएंगे, but they are directly not equal to each other. For example, this side is 4 centimeter, this side is 2 centimeter. So the ratio is 4:2, 2:1. कट अगर हम इससे करें तो इनकी रेशो है 2:1. Again this is 4. This is a square, as you know that all the sides of a square are equal. This is also 4. This one side is also 4. This is 2, 2 and 2. So the ratio for this particular side is 4:2. Again 2:1. Again 2:1 and again 2:1. So the ratio for all the four different sides is 2:1. This is the main answer of your ratio, or this is the proportion of this ratio. For example, the first ratio is 2/1, second is also 2/1, third one is also, fourth one is also. Now they all are equal. So these are known as the proportional. अब ये ratios आपकी क्या कहलाएंगी? Proportional कहलाएंगी. So in this way, these two diagrams are not congruent. They are not equal, but they are similar because their sides are proportional. Now we are starting our today's topic for chapter number 12. Our today's topic is area of similar figures. Similar figures में आपके पास कोई भी figure हो सकती है. You may have any geometrical shape, a circle, a square or a rectangle, a triangle, any of the shape. So you have to open the page number 388 from your book, and on page number 388 there is a statement. The ratio of the areas of two similar figures is the square of the ratio of their corresponding lengths. The ratio of the areas of two similar figures. For example, there are the two similar shapes. First one, second one. So the ratio of their areas. Its area is A1. Its area is A2. Ratio is represented as this, or we may also write this as A/B. तो हम रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में यहाँ यूज करेंगे. सो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर फिगर, एरियाज एंड देयर रेशियो A1 और A2, or you may write this as A2 or A1, both are correct, is equals to the square of which one? The ratio, the square of the ratio. Ratio of what? The ratio of the corresponding length. This is your A2, this is your A2, so here we will write L2. This is your A1, the area number 1, so here I will mention the length 1. This A2 and this A1 is representing the areas, and this L2 and L1 is representing the lengths. The area of the two similar figures will be given, and the two different lengths will also be given for the two different shapes, and you have to make the ratios and then the ratio for the areas, and it will be equal to the square of the ratio of their lengths. But you have to remember, if you are keeping your A2 at the numerator position, then you will keep L2, the length number 2, the length of the similar of the same shape.
आपने A2 ऊपर रखा फ्रैक्शन में यहाँ पर, तो अब जो आप इसके इधर लेंथ रखेंगे न्यूमरेटर में राइट साइड पर, वो आप इसी शेप की लेंथ रखेंगे, दैट इज L2, A2, L2, A1, L1. So we will use this formula for finding out the different values of the given questions. This is a simple and a easy exercise from chapter number 12. There are only two exercises, 12A and 12B. Today we are discussing 12A. Inshallah in the next video class we will discuss the last or the second exercise for this chapter. So kindly come to the page number 393. On 393 we are having a question number 1. Find the unknown area of each of the following pairs of similar figures. And you have to remember, whenever we are discussing the similar figures, it simply means that we are comparing the two different figures. टू डिफरेंट फिगर्स को कंपेयर किया जाता है, तभी हमें पता चलता है कि वो सिमिलर हैं या वो सिमिलर नहीं है. तो जब भी सिमिलर फिगर्स की बात होगी, क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम्स का, दो फिगर्स का डेटा दिया जाएगा, यानी दो फिगर्स या दो डायग्राम्स आपको गिवन होंगी. एज यू कैन सी इन द एवरी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 12 यू आर हैविंग द टू डिफरेंट डायग्राम्स. दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर. दिखने में एक जैसे हैं, साइज में एक डायग्राम बड़ी होगी, दूसरी डायग्राम क्या होगी, छोटी. Let's have a look to the part A. The two triangles are given. A1 is 64 centimeter square, A2 is unknown, the question mark. Then 8 centimeter and 2 centimeter is also given. Question number, firstly I will mention the head of my exercise 12A. This is exercise 12A. Question number 1, data. Yes, A1 is given as 64 centimeter square. A2 is unknown. And then the two lengths are given. A1 की लेंथ आपको एक साइड की गिवन है ट्राइंगल की 8 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी सिमिलर ट्राइंगल की जो लेंथ है आपके पास वो है 2 सेंटीमीटर. अब आपने बड़े ट्राइंगल के एरिया को अकॉर्डिंग टू बुक हमें A1 कंसीडर करना है, तो जो इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज L1. 8 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज L1 and the next will be L2. And the next is 2 centimeter. This is 2 cm. Simply this is the data. Now I am writing the solution. As we know that A2 divided by A1 is equals to L2 divided by L1 whole square. Now A2, what is A2? A2 is unknown. The question mark figure, A1 is 64, L2 is 2, L1 is 8 with the whole square outside the bracket. Now they will be cancelled by 2, 2 ones are 2, 2 fours are 8. It will become 1 over 4 whole square. This is A2 divided by 64. Again A2 divided by 64 will be equal to, स्क्वायर को आप इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर पर अलग, डिनोमिनेटर पर अलग. सो इट विल बिकम 1 1s are 1, 4 4s are 16. Now we are multiplying these two fractions by cross multiplication. A2 multiply by 16, 1 multiply by 64. So it will become 64, it will remain A2, and 16 that is getting divided on the left hand side, I will shift this number to the right hand side and it will be divided by my 64. Now they will also be cancelled again, as 6 ones are 16, ones are 16 and 16 fours are 64. So the answer of A2 is 4. But we are observing that in the question
the measurements were given in the centimeters and the area 1 was given in the centimeter square. So don't forget to mention the unit of the answer, that is 4 centimeter square, the answer of the second area. Now we are solving question number 2. Question number 2 from the same page, that is 393. Find the ratio of the areas of two circles. Find the ratio of the areas of the two circles whose radii are 4 cm and 7 cm. दो रेडियस हमें गिवन है और सर्कल्स का हमें A1 और A2 यानी दो एरियाज की रेशो बतानी है. अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. डेटा लिख लेंगे पहले. A1 रेशो A2 हमें फाइंड करना है, जो कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल हो जाएगा, A1 अपॉन A2 के. और गिवन हमें R1 है और गिवन हमें है R2. R1 इज 4 सेंटीमीटर एंड R2 इज 7 सेंटीमीटर. इससे भी हमने राइट कर लिया. सॉल्यूशन लिख लेंगे. अब क्योंकि ये रेशोज हैं, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, दीज आर द रेशोज. तो रेशो में अगर आप A रेशो B लिखो या आप क्या लिखो B रेशो A, दीज टू आर इक्वल. ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है. इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन में लिखें A अपॉन B या हम लिखें B अपॉन A, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने A2 को ऊपर रखा है और वहां हम ऊपर अब किससे रखने लगे हैं, A1. Whenever we are in need, so we can shift these two different fractions as per our need. So this will become A1 divided by A2 is equals to L1 over L2 with the whole square. A1 and A2, this is the side that we are going to find out. So I am not putting the value of my left hand side and I am simply working on my right hand side. L1 is your radius 1. L, what is radius? Radius is the length from the center of the circle to the any point of the circle. For example, this is a circle and this is the center of the circle. तो इस सेंटर से पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पॉइंट A ले लिया, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, इसे सर्कल की प्रॉपर्टीज में रेडियस कहा जाता है, जिससे हम स्मॉल r से अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ. सो L1 इज R1 4 एंड L2 इज R2 7. स्क्वायरिंग के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया. अब क्योंकि ये एक टेबल में नहीं आते, कैंसिल नहीं हो सकते, स्क्वायर इंडिविजुअल कर देंगे. अल्टीमेटली it will become 4 into 4 16, 7 into 7 49 and this is A1 over A2 or A1 ratio A2 is equals to 16 ratio 49. This is the answer of our question number 2. देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है ये. Now we are starting our question number 3. Another simple question. A triangular plot of land. Triangular means a plot of the land or the part of the land that is triangular in shape. एक triangle की बात की जा रही है यहाँ पर. Is such that the PT is equals to 6 meter and the PR, the second side, the second length is 10 meter. ST and QR are the two water pipes that are parallel to each other and the area of triangle PST is 24 meters square. A diagram is also given and we have to find the area of the land occupied by A triangle PQR, then SQRT. This is the diagram. P S Q T R. According to book, the length of this side, the PT side, is 6 meter. Then the length of side PR from P till R, from here till here, this length is 10 meter. ST and QR are the two different pipes that are parallel to each other. The area of triangle PST,
triangle PST, the area of triangle PST is equals to 24 meter square, or triangle PQR, the area of the larger triangle. We have to find first. Simply we will mention the data. Two different lengths and one area is given. The second area of the second triangle we will find. Then we will find out the area of the SQRT. So the length of side PT is our L1. L1 is 6 meter. Then side PR, the second length is L2 और second length है हमारे पास 10th मीटर. एक एरिया भी हमें गिवन है. किसका एरिया गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PST. सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल PST A1 हम इसे कंसीडर करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा किसके? 24 मीटर स्क्वायर के. अब आप देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल PST आपने A1 रखा है तो इसकी जो लेंथ है, जो इसके साइड की मेजरमेंट है वो 6 मीटर है. अब हम ये चेक करेंगे कि हमने इसे L1 कंसीडर किया या नहीं किया. तो एरिया A1 है तो इसकी लेंथ भी L1 होनी चाहिए. तो L1 आप देख सकते हैं साइड PT है आपका और L1 आपकी क्या है? 6 मीटर. और इस ट्रायंगल का एरिया आपका है 24 मीटर स्क्वायर. अब आपने दूसरी ट्रायंगल PQR का एरिया मालूम करना है और इसकी लेंथ जो है, इसका साइड गिवन है 10 मीटर PR, इसे हमने L2 कंसीडर किया है. तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी आपके पास क्या होगा? A2 होगा, जिसे आपको करना है फाइंड. इसके अलावा एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है हमारी, वो है एरिया ऑफ SQRT. वो भी हमें फाइंड करना है. लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर सॉल्यूशन मेंशन कर दिया मैंने. फॉर्मूला लिख लेंगे. फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास? A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर. A2 आपके पास अननोन साइड है, A1 आपके पास है 24, L2 है जी 10 और L1 आ गया हमारे पास 6. डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 से कैंसिल किया, 2 5 10, 2 3 6. अब स्क्वायर 5 पर इंडिविजुअल, 3 पर अलग, 5 5 25, 3 3 9 और इधर आपके पास आ जाएगा A2 ओवर 24. अगेन A2 ओवर 24. 2 स्टेप मेंशन किए, दोनों दफा लेफ्ट साइड मेंशन करेंगे. Now by cross multiplication they will become A2 multiplied by 9 and 25 multiplied by 24. 25 और 24 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 600. 50 and 4 600 इसका आंसर आ जाएगा. काइंडली चेक इफ आई एम रॉन्ग. 600 divided by 9 is your answer for A2 and after division it will become 66.6. 6 I think so. 600 divided by 9. Yes, 66.66 is the answer of your area 2. Means the area of triangle PQR. A2 हमें फाइंड करना था. फ्रैक्शन को हमने अप्लाई किया, फॉर्मूले को अप्लाई किया, बहुत ही आसानी से A2 के लिए वर्क कर लिया, यानी ट्रायंगल PQR को हमने फाइंड कर लिया. लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी रह गई एक एडिशनल रिक्वायरमेंट, जिसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ SQRT. अब SQRT कौन सा जगह है? ये है SQRT, जिसमें मैं ये शेड दे रही हूँ. इस एरिया को मुझे बताना है कि इसकी मेजरमेंट इस वक्त कितनी है. तो देखें ट्रायंगल PQR यानी इस बड़े ट्रायंगल में से
अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो जो एरिया मेरे पास बचेगा वो किसका आंसर होगा, SQRT का। बड़े ट्राइंगल के आंसर में से यानी बड़े ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल PST यानी छोटे ट्राइंगल को माइनस कर देती हूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा SQRT का। बिल्कुल इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम हेड लगाएंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2 का। एरिया ऑफ SQRT is equals to A2 the area of triangle PQR minus A1 the area of triangle PST. C A2 area of triangle PQR, A1 area of triangle PST माइनस कर देंगे। A2 का आंसर हमने अभी कैलकुलेट किया है 66.66 माइनस, और A1 का हमारा आंसर है जी 24, माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 42.66। यहाँ आपको एरिया गिवन था मीटर स्क्वायर में, तो आप इसके साथ भी मीटर स्क्वायर लगा देंगे और इसके साथ भी क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर का यूनिट। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ SQRT। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक और आसान सवाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज के आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पेज देखना है आपको, पेज नंबर 394। फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। पार्ट ए सॉल्व करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंटेंट। टू ट्राइंगल्स आर गिवन। The area of the first triangle, that is A1, 24 centimeter square. A2, the area of the next square triangle is 6 centimeter square. The two different corresponding lengths are also given. ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 3। और अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। A2, A1, L2, L1। A2 हमारे पास है 24। आप किसी को भी A2 कर लें, किसी को भी A1 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हर बार में सेम ही आना है। A2 आप कर लें, A1 कर लें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को। फिर हम आ जाते हैं किस पर, डेटा लेंथ पर। अगर आपने 24 सेंटीमीटर को अपना A2 बनाया है तो फिर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो फिगर की लेंथ है दैट इज A सेंटीमीटर, आप इसे L2 बनाओगे। फिर क्या बनाओगे, L2 A सेंटीमीटर, द अननोन साइड। इस फिगर को आप फाइंड करने लगे। L1 हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख लिया। अब आपके पास A2 भी है, A1 भी है, L1 भी है। L2 आप फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे और इक्वेशन आप लिख लेंगे दोबारा से, A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाय L1 होल स्क्वायर। अब इसके आगे का जो काम है, डू इट योरसेल्फ, दिस इज योर प्रैक्टिस पार्ट, राइट। नाउ आई एम मूविंग टू माय होमवर्क session. As you know that after the completion of every class lecture we have to solve some parts for the practice and also to check the understanding level, that how much you are getting with the help of this video, the video lecture. So for that I am mentioning my homework over here. So our today's homework is, firstly you will practice our classwork. Classwork means exercise 6D, जो कुछ हमने आज पढ़ा 6D में और जो कुछ हमने पढ़ा exercise 12A से, ये सब आपका classwork है। इस सब की आपको practice करनी है। Then you will move to the next part, that is really very important to solve. And this is the question number 11, part 1 and 2. Part 1
part 2 of review exercise 6. This homework is from chapter number 6, is for chapter number 6, not for chapter number 12. In the next video class, I will give you another solving part for chapter number 12. And because in the next video session, inshallah, we will complete this chapter number 12 with the all exercises. And this is on from book, page number book page number is 170. So this is the end of your homework and your today's video class is over right now, and I hope that you have understood all the things clearly. If you have any problem, then watch this video again and again. Inshallah, in the next class we will complete this chapter number 12, area and volume of similar figures and solids. Till then, take care of yourself. Goodbye.